हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और हमारे पेशेंट हैं शुभम अजमानी। ये एक न्यूट्रिशन भी है, डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशन भी हैं और काफ़ी अच्छी इनकी प्रैक्टिस है दिल्ली में। और ही इज़ वेरी क्वाइट इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड बॉय व्हाट आई फाउंड। इसको थोड़ा सा बिगनिंग से एक इशू था नॉक नीज का। सो नॉक नीज के बाद जैसा कि वी नो दैट बिकॉज ऑफ द नॉक नी योर स्पाइन ऑलवेज कॉम्पनसेट एंड स्पाइन सफर्ड। सो नॉक नीज की वजह से जो इश्यूज आ रहे थे उसकी वजह से इसका पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी हमने इसके स्पाइन पे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के कुछ सेशंस किए हैं और अभी आफ्टर फ्यू सेशंस आई कैन फाउंड के ही इज़ क्वाइट स्ट्रेट नाउ। इनका जो पॉस्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और एक बार हम शुभम से ही पूछेंगे कि इनको जो है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के बाद क्या इनको चेंजेस फील हो रहे हैं। और पहले इनका थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपने बारे में भी बताएंगे ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। आप लोगों को भी अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की ज़रूरत हो तो आप शुभम से कांटेक्ट कर सकते हैं। शुभम, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। Hi Dr. Saab, hello everyone. I'm a nutritionist and I guide people to lose weight and gain weight. I've myself lost around 45 kgs of weight. I had an knock knees problem by birth. It's called rickets problem. It generally causes about when in pregnancy rate, like when women have a deficiency in folic acid, they can the child can bear some problems around limbs and knees. So I had this problem. I got operated in 2009, and since then I had some major issues in my knees because of some low tendons and weak spine. आफ्टर मीटिंग डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जो मेरी अभी तक सिर्फ 4 सिटिंग हुई हैं एंड आई कैन सी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन माय स्पाइन, द वे आई वॉक, द वे आई स्टैंड, द वे आई परफॉर्म इन माय जिम, एंड आई एम फीलिंग फैंटास्टिकली गुड एंड ही इज ट्रीटेड माय मदर आल्सो एंड शी इज also damn okay. So I'm greatly thankful to the doctor साहब। एंड ऐसे डॉक्टर हमारे दिल्ली में है, दिल्ली का नाम प्राउड हो रहा है। हम तो खुश हैं कि ऐसे इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने ज्ञानी लोग हमारे दिल्ली में लोगों को ठीक कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कायरोप्रैक्टर के बारे में, बट प्लीज कम टू मीट हिम। ही कैन जस्ट गिव यू अ न्यू लाइफ. If you have any injuries, any like performance, lack in performance, anything like that, he can just give you a new life, new way of walking, new way of talking, new way of confidence. Like you can just stand over your toes. थैंक यू शुभम। सो जैसा शुभम ने एक बहुत अच्छी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं मिस आउट कर गया था बताया कि कई बार बच्चों में, चिल्ड्रंस में एक प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स बोलते हैं उसको, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। एंड उसकी वजह से जब हम ग्रो करते हैं, बच्चा ग्रो करता है, चलना शुरू करता है, तो उसके पैर ऑटोमेटिकली थोड़ा टेढ़े होते जाते हैं और बोन जो है अंदर की तरफ मूव कर जाती है, जिसको बड़े होके हम जीनू वेलगम या रिकेट्स या नॉकनीज बोलते हैं। नॉकनीज की वजह से जो है वो सारा बॉडी जो है, स्पेशली द pelvis एंड स्पाइन, दैट एरिया कंपनसेट, एंड उसकी वजह से हमारे पॉस्चर में मिसअलाइनमेंट काफ़ी होते हैं। तो इसका भी वही केस था और अभी हमने स्पाइन पे काम करना शुरू किया है। अभी 4 सेशन हमने किए हैं। ही इज़ फीलिंग बेटर और आगे जाके और इम्प्रूवमेंट होगा। इसने अपनी मसल्स को काफ़ी अच्छा ट्रेन किया हुआ है। ही गोज टू द जिम ऑल्सो एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो ही नोज हाउ टू ट्रेन द मसल्स एंड ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड ऑन हिज बॉडी। तो एक कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट अभी हम शुभम का आपको करके दिखाएंगे। आइए। सबसे पहले हम आज एक बार फिर से इनका लेगलेंस मेजर करेंगे। अभी आप देखेंगे तो शुभम का लेगलेंस जो है काफ़ी बेटर हो गया है। स्टिल इनका जो राइट लेग है वो थोड़ा सा शॉर्ट है लेफ्ट से। इनिशियली जो हमारा डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आफ्टर द कायरोप्रैक्टिक सेशन इट इज़ इम्प्रूविंग। स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन हिज स्पाइन। सो जो अभी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ये भी आगे जाके कम हो जाएगा। Just relax, lose your neck. Yeah. So we are starting with the T1 adjustment करके lose. Yes. Just relax, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax your shoulder, lose your shoulder.
Turn to my side. Just leg straight. Just relax. Breathe in. Breathe out. Loose. The other side. Just relax, loose, relax, breathe in, breathe out, straight. That's it. Towards the center. Just relax and loose. Relax, relax. Sit down. So you have just seen a chiropractic adjustment for the spine. So if you have a similar problem or if you have any kind of spine problem, you can mention your problem in our comment box and we'll definitely get back to you. If you need any nutritionist problem or dietitian help, you can mention your problem in the comment box. We can guide you and we can give you Shubham's number. He will help you out definitely. Thank you viewers for watching our videos and appreciating our work. Please subscribe our channel and please share our videos. Thank you very much. Thank you Shubham. Thank you so much, doctor. Thank you. He's a nice person. Please contact. Thank you.